Jari. Hello. So, good afternoon, everyone. Today is let us welcome Dr. Dharna Bharadwaj for the second session on celebrating happiness, finding your ikigai. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Parikshit. A very warm welcome to you all. Good evening, one and all. So let's start with our session today. So we are going to today interact and discuss about the topic or the session, which is celebrating happiness and finding your ikigai. So basically, happiness has always been an eternal question. And many kings, including Lord Buddha, they left their kingdoms in the pursuit of happiness. So happiness is really, really a question which all have researched or searched for a very long period of time. So what do you think if we come to our nation, if we talk about India, how happy are we as a nation? So kindly please drop your answers. What do you think? How happy are we as a nation? So, okay, let me give you a perspective then. So, as Indians, there was a study which was undertaken by there was a report by World Happiness Report, and India was ranked as 140th nation for the on happiness, and we were far behind our own neighboring countries. So, what to talk about Pakistan or Bangladesh? So, India was far, far behind. Now, so this is the state. And America, 1 out of 10 Americans, they are on prescribed antidepressants. And if we talk about India as such, in India, we usually don't even take prescriptions. We are self-proclaimed doctors or the advisors. We are our best advisors also. So we often take self-prescription, and then the effects are also very, very disastrous. So we very well know that we are not a very happy nation. Now, the thing is, we understand uh, how important it is that we should stay positive in our emotions to remain happy, right? So, to understand this, it's very important that our day-to-day positive emotions, they are actually the nutrients for our overall well-being. So let us understand what role the positive emotions play in our life. So there was a very classic study, a very interesting study done on 200 nuns. तो अराउंड 200 नन्स थी और हुआ क्या उनके ऊपर एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करी गई थी उन्हें कहा गया था दे वर टोल्ड दैट दे शुड राइट इन अ डायरी regarding their life events. So daily they used to maintain a diary. Now, after 70 years, these diaries were analyzed of all these 200 nuns, and it was found that these nuns they lived longer who had been analyzed for more positive emotions on a day-to-day basis. So definitely, when we are having positive emotion, we live longer also, and it has been found that even our immune system there is a positive effect on positive emotions. If we have positive emotions, our immunity also enhances. So overall longevity is increased. So that is how positive emotions need to be enhanced in our day-to-day life. So now let us understand what is the difference between people who are happy, who are flourishing, who are thriving. So basically जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो लोग जो कि बहुत खुश नहीं हैं. So what is the basic difference? The basic difference is that how much positive emotion they are able to feel. क्या intensity है उनकी positive emotions को feel करने की. That there lies the difference. So these people who are thriving and who are flourishing,
they are able to they self-generate this positive emotion on a day-to-day basis. So, for example, यदि if these people are good at personal relations, तो उनके friends ज़्यादा होंगे, उनके social interactions ज़्यादा होंगे, they love to learn, they do something or the other, some learning activities would be there, and also they are very social people, and their interpersonal skills are also good. So these people stay happy. So by now we have understood it's important to stay happy. And let us see what are the factors which affect our happiness. तो happiness को कई सारे factors होते हैं जो affect करते हैं. So let us understand more about this. So if you can see, this is a picture which shows balloons, right? Happiness is just like a balloon. So when you see balloon, जब balloon देखते हैं तो हमें क्या चीजें याद आती है? Balloon for me is something fun, something which is, you know, celebrating some sort of event. तो हम birthdays में balloons use करते हैं या हम anniversary में use करते हैं, किसी भी positive event में हम balloons को use करते हैं. So happiness is also like a balloon. अगर आपके हाथ में balloon है, anybody along with you can see how big that balloon is. That means how happy you are. Similarly, if let's say हम लोग जब छोटे थे या हम किसी छोटे बच्चे के लिए जब बलून लाते हैं, अगर हम उस बलून को रात भर छोड़ दें और सुबह वापस जब देखेंगे तो उस बलून को जब देखना चाहेंगे तो शायद वो इतना बड़ा नहीं रहता, उसमें थोड़े थोड़े माइक्रो होल्स होते हैं, उससे वो बलून फुस हो जाता है. सेम वे हमारी हैप्पीनेस के साथ भी होता है. कुछ चीजें हैप्पीनेस को एनहांस करती हैं, they are the pumps or the boosters of happiness, and there are certain things which dissipate or diffuse our happiness. Similarly, happens with the balloon, same thing happens in our life also. So now, is it easy to measure happiness? क्या happiness को हम measure कर सकते हैं? What do you say? Just put yes or no. What do you say? Is it easy to measure it? क्या measure किया जा सकता है? What do you say? So Someshji says, no, we cannot measure happiness. But it is interesting that we can, but yes, it is not that easy. So what happens is, we can simply ask the person. So many people say, no, we cannot measure happiness. Happiness को हम measure नहीं कर सकते. But interesting fact क्या है? We can still measure the happiness. And how can we do that? We'll be also talking about it. हम enhance कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर तो ये पूरा session है ही. So हम सिंपली लोगों से पूछ सकते हैं, what makes you happy, how happy you are. अगर आप किसी से पूछेंगे कि कल आप कितने खुश रहेंगे तो nobody can answer it, या कल आप कितने खुश थे वो भी आप नहीं बता सकते. But in the present moment, how happy are you? You can tell that, right? So simply asking that question also can measure happiness. There have been many studies, तो काफी सारी studies हुई हैं जिसमें कि ये पता लगता है. अब natural है, happiness is not like money. जैसे आपके बैंक में कितना पैसा है, you know very well how much money is there in your bank, right? But you cannot know how much happiness is there. There is no thermometer to, you know, measure. Just like you measure temperature, you can't measure the happiness. But at times what happens, like in Anand movie, एक पुरानी मूवी है राजेश खन्ना की, उसमें सब लोग, अगर राजेश खन्ना को कैंसर था, टर्मिनल पेशेंट थे वो कैंसर के, और उनके जीवन के बहुत कम दिन बचे थे, और अगर कोई उनको देखता तो उन्हें लगता है ये बहुत खुश हैं, बट एक्चुअल में अंदर से वो खुश, ऑब्वियस है कि अगर कोई इतना बीमार है तो इतना खुश तो नहीं हो सकता. सो एट टाइम्स वी जस्ट लुक एट अ पर्सन, हम देखते हैं कि इंसान हंस रहा है and we think that person is happy, but actually it is not so. So looking at the person, we can never find out whether the person is happy or the person is not happy. Now, हमारा ये जो बलून है, लेट्स कम बैक टू द बलून, तो जितना बड़ा हमारा बलून होगा उतना ही हमारी हैप्पीनेस हमारी ज्यादा होगी, राइट? सो उसकी साइज क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट? बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं और बहुत सारी चीजें से डिफ्यूज करती हैं. चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द हैप्पीनेस डिफ्यूजर्स एंड व्हाट आर द हैप्पीनेस बूस्टर्स. अच्छा, ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द स्टूडेंट्स हियर, what are the things which matter the most to you? Students or maybe the professionals who are here, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है आपकी हैप्पीनेस को एनहांस करेंगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल. जब आप कॉलेज में एकदम आते ही हैं
तो सबसे पहला जब सेमेस्टर होता है तो पहली चीज आपको क्या लगती है, क्या होना चाहिए जिससे यू विल बी हैप्पी और यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर? व्हाट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन you have? I'll just request you to just type in the chat box. What do you think is required for success, or let's say for you to be happy? Good grades, right? Okay, let's say कि आपके teachers, good teachers of course, but let's say we talk about supportive environment, good teachers, and for a student I think good grades. ओके अभी अगर गुड ग्रेड्स आ गए तो नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए होगा? आई थिंक यू वुड बी नेक्स्टली यू वुड बी थिंकिंग अबाउट द राइट टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स, राइट? एंड लेट्स से इंटर्नशिप आपको मिल जाता है, तो इंटर्नशिप आप पेड चाहेंगे, अनपेड चाहेंगे? एज अ स्टूडेंट, थिंक एज अ स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट गोल फॉर यू? जस्ट राइट पेड और अनपेड, जो भी आपको लगता है, जो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए. All right. So let's say that paid. So you will be more happy if you get the paid internship. अब next step क्या होगा? After this, what would you like to have? You like to have a job, right? सब कोई जब पढ़ लेते हैं उसके बाद we all want to have a good job with us. And what type of salary you will like to have? A high salary or a low salary will do for you? What do you say? Once you come out of your MNIT or triple IT quota, so would you not like to get more money? Yeah. So that is usually what is the answer of the students. So these are the things which people usually answer. So things which matter for anybody are good grades, internships, good job, high pay. Then after you get a pay, you want to have a beautiful partner, you know? So you want to have good relationships, and then you want to have close connect with people around you. Do you think these things really, really matter? What do you say? We think that these things matter, right? What do you say? Please write yes or no in the chat box. Do you think these things? Yes. So I get some yeses here. Fine. So these things definitely matter. This is how we think about it. But the fact is, let's check what is the fact. So this is your answer that yes. Hemant also says that it does matter. So now let us see. 40 years back, this famous Beatles group. So it gave us a song, famous song. The best things in my life are free, but you can keep them for birds and bees. Now give me money. That's what I want. That is the top goal of any college student. Even today, after 40 years, this is equally relevant. आज भी students का top goal यही है. एक LinkedIn का भी survey हुआ, latest survey हुआ था, जिसमें भी यही निकल के आया कि more than 74% of the students want money, right? और इसीलिए जो tech guys होते हैं, they get into banking, they get into all sort of consultancy so that they, earn better. So this is what students think will make them happy, right? So what do you think? How much money is enough? Let's say, okay, fine, we want money. And now what do you say? How much money should be enough for you? How much salary do you need for yourself? आपको क्या लगता है? Let's say कि आपकी 30,000 salary है. Will you be happy, or how much you will want? So, Sonja is a very famous psychologist जिन्होंने एक famous study करी थी. तो she found out that let's say $30,000 किसी की salary है. और जब उनसे पूछा गया, is it enough for you? So see what answer the people gave. So those who were currently earning 30,000, they thought they would be happy if they get $50,000, right? अच्छा, अब अगर सोचें कि अगर किसी की 1 lakh salary है, अब तो वो खुश होंगे ना? What do you say? What is your answer? Please write in the chat box. What do you say? Would that person be happy or not? If somebody is getting 1 lakh. 1 lakh per month. So do you think that student would be, or that person would be happy? What do you think? Please write in the chat box. So Saurabh says no, ma'am. Okay. Any other answers? How much would be enough then? If not this, then what? So the answer was, so those who were currently earning 1 lakh, they wanted 2.5 lakhs.
Isn't it interesting? So this was a very famous study which was done, and this was what they found out. So एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट सैलरी का लेवल क्या है. तो आपको उससे ज्यादा ही चाहिए होता है, उससे कम नहीं चाहिए होता. सो योर हैप्पीनेस लेवल डिपेंड्स ऑन करंटली व्हाट यू आर गेटिंग. So this is how we look at happiness, right? So it is also like a visual illusion, let's say. Let's understand it more. Let's go a little bit further and let's see what can you see here. So this is a statement I have written. Knowing is half battle won, right? So आपको क्या लगता है, ये सही है ना? Knowing is half battle won. अगर हम जानते हैं तो हमने आधी जंग तो जीत ही ली है. What do you say? Yes or no? Kindly just write your answers there in the chat box. May I request you to write your answers? Do you agree or you disagree? Saurav says yes. May I have some more answers, please? Hemant says yes. Yogesh says yes. Okay. All right. Now you will be quite surprised when I give you this answer. All right. So, contrary to what we believe, knowing something is actually not equal to really changing how you think about the same thing and how you actually behave. हम जान सकते हैं किसी चीज के बारे में, but it is not similar to how I can actually change my habits. So to change your habit and to actually change your behavior, only knowing is not sufficient. Okay? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. I'll be showing you a picture. Just look carefully on the screen. So just tell me which line is longer. You can see two lines on the screen, right? आपको दो lines दिख रहे हैं. आप इसमें बताएं कौन सी line आपको लंबी दिख रही है? Which one is longer? Okay. Janvi says has given an answer. Okay. So everybody I can see in the chat box says that these lines are equal. But are your eyes able to see them as equals? आपको equal लग रहा है क्या? Yes, Manish says the top one seems longer, but both are equal. Top one looking larger, very right. So Rashmi and Manish have given the apt answer. It seems to be longer, but everybody is right that it is equal. Everybody can answer that very well, right? So, okay, I will give you another twist to the same thing. Just see on the screen, follow the screen. Now, can you see two tables there? Yes. So, just tell me, which particular table is more wider? कौन सी ज्यादा चौड़ी है? Left वाली या right वाली? Right one. Okay. Somesh also says right. Rashmi also says right. Shrestha also says right. Okay. All right. Any other answers? Nobody for left? Everybody left the left. Okay. Saurav says perspective, both are equal. Rita says both are equal. Yes, very true. Both are equal. So, so when we measured both the things with, the paper, the answer was they are both equal. So basically this is visual illusion. ये misperception है. हमें आंखों से जो दिखता है वो जरूरी नहीं है सही हो. The same thing happens with the happiness also. All right. So basically, what happens is knowing is not winning the half battle. Basically, as a psychologist, I also know, I have also read this, that this is a visual illusion, but still my eyes are thinking and looking at it, and I'm thinking no, the upper one is longer. या दोनों टेबल में से एक ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबी है. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, right? So you can't teach your eyes. You cannot tell your eyes what is right, what is wrong, है ना? So now, despite of knowing that these two things are similar in length, still we fall in the same trap all the time. That means if we really want to change ourselves or our behavior, we really need to change our habits. This is why हमारे जो संसार है ना उसे भी माया नगरी कहते हैं, माया सागर कहते हैं, right? तो everything is illusion actually. तो happiness के बारे में जो हम सोचते हैं ना वो illusionary है. Actually, it is not true. Now let us see this particular pic. Can you see this pie chart type of a thing? अब हम factors की बात करें, we are talking about what contributes in our happiness.
So 50% of the times happiness is contributed by the genes, यानी हम जो स्वभाव लेके आते हैं, the temperament which we have, the personality we already possess, 50% depends on that. You remember शुरुआत में मैंने जो emotional state की बात करी थी या temperament की बात करी थी, it depends on your genes how you would be feeling about certain things. And then 10% goes to the life situations, and rest of the mega chunk, it depends on how we think, how we feel, and how we behave in that situation. So आप समझ सकते हैं happiness हम सोचते हैं कि situations पे depend करती है, and isn't it interesting to know that it doesn't depend on any situation. It actually majorly depends on how you look at it, how is your perception about the thing, right? So this is how it happens. So अब मैंने आपके सामने 3 तस्वीरें रखी हैं, right? This is very interesting finding which came out. अभी पिछले 20 सालों से happiness के ऊपर ही researches चल रही हैं. तो researchers have found out आपकी लाइफ में कोई भी मेगा इवेंट भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली इवन इफ यू मीट एन एक्सीडेंट और आपके जो लिम्स हैं पैराप्लेजिक हो जाएं आप, यानी कि अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों नहीं रहे, या आपको लेट्स से करोड़ की लॉटरी केबीसी जीत जाते हैं आप, राइट? आपको लॉटरी लग जाती है. In both the events, after a point in time, let's say after 1 year, the level of your happiness comes to the base point. यानी जेनेटिकली आप जितने खुश रहने के आपका जो मिजाज है उतना ही आपकी हैप्पीनेस का बेसलाइन वापस रिटर्न हो जाता है. This is a very big indication that life circumstances actually do not govern us. It is how we are looking at the things, right? So this is something very pertinent. Now, talking little bit more, अब क्या होता है, हम सोचते क्या है कि अगर नया घर मिल जाएगा या नई गाड़ी हम खरीद लेंगे या लेट्स से कि नया पार्टनर मिल जाता है, यू फाइंड न्यू लव, है ना, सो यू थिंक दैट यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ. बट होता क्या है, these don't last for very long. मतलब थोड़ी देर के लिए खुशी होती है obviously. If you purchase a new car, you feel very happy, or you get a new house or a new job, you get very very happy, but not for very long. It doesn't sustain, it doesn't last longer. And people are not good at predicting how happy they would be, है ना? They do not understand this. So let's say कि आपको कोई promotion होने वाला है, या whether you pass in an exam or you fail in an exam, whether you get promoted or you get demoted, or let's say whether you get a job, you don't get a job, it does not, or you get a heartbreak, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर, है ना, हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि आई विल बी सैड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जनरली आई सी इन माई थेरेपी ऑल्सो, तो जो उस समय उन्हें लगता है कि दिस इज गोइंग टू लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग, but actually after let's say 3 months, maximally for some people for a year, then the happiness again returns to the baseline, right? So nothing affects us more than let's say 3 months or a year. So when good things happen, we celebrate for a while and then we sober up. उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़े दिन तो सेलिब्रेशन चलती है. सेम वे जब कुछ दुख होता है हम थोड़ी देर होते हैं, फिर अगेन वी बिकम नॉर्मल. तो ब्रेन की टेंडेंसी है ओवर एस्टिमेट करने की, सुख को भी और दुख को भी. बोथ द थिंग्स वी ओवर एस्टिमेट, वी डू नॉट नो. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देन व्हाट डज, फिर हैप्पीनेस मिलती किससे है ना? इंटरेस्टिंग है कि अब लेट्स सी व्हाट मेक्स अस हैप्पी नाउ. सो नो ब्लेसिंग्स ब्रिंग्स परपेचुअल ब्लिस. कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कितना भी अच्छा हो जाए, आप हमेशा तो खुश नहीं होने वाले, ये तो सेट है, राइट? एंड पीपल क्विकली रीच टू अ पॉइंट वेयर थ्रिल इज गॉन. आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने बात करी, थ्रिल वो चला जाएगा, भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, भले ही आपके साथ कुछ भी नया चीज क्यों ना हो, और आपकी एस्पिरेशंस लाइफ में बढ़ती ही रहेंगी. तो आपकी जितनी उम्मीदें बढ़ेंगी उतनी ही आपकी हैप्पीनेस कम हो जाएगी उस चीज को लेके. नाउ अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, या एक छोटी सी चीज हम भी समझ सकते हैं इसको. हमारा जो दिमाग होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वहां पे नहीं लगता. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लेक्चर में या सेशन में बैठे हैं, थोड़ी देर तक तो सब लोग ध्यान सस्टेन कर पाते हैं. उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप अपने खुद के फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए एक ट्रिप मार के आ जाते हैं. जैसे खूब सारा काम पड़ा है ना, यू आर इन अ ऑफिस और लेट्स से यू आर इन अ लेक्चर, you go to Goa, and when you are in Goa, you start thinking about the work which is pending. So mind is like this, mind starts wandering, और जब जितना हमारा माइंड वेंडर करता है उतना ही हम अनहैप्पी रहते हैं. These studies show that. तो एक
बहुत बड़े सैंपल पे 2500 पीपल पे ये सैम्पलिंग की गई, मिनट मिनट को ट्रैक किया गया, आफ्टर 10 बीप्स इन अ डे दिए गए, एंड इट वाज फाउंड पीपल इन देयर मोस्ट इंटीमेट मोमेंट्स. So when people are having when they are even making love, even that time they wander off, they start fiddling with their phones and all that. So basically it's very difficult to keep your mind on track. So these experiments also says एक छोटी सी चीज और भी मैं बताती हूँ. जैसे हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस को मेजर करने की, तो ये जो ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था ये भी हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए ही किया गया था कि हाउ हैप्पी पीपल आर, और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें हम लोग ज्यादा हैप्पी फील करते हैं और कितना ज्यादा, राइट. फिर ये पाया गया, इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी. जैसे जो डॉक्टर होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेट्स से कि आप एक आई सर्जन के पास या आई डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको एक आई ग्लास का प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो वो क्या करता है, एक डिवाइस लगाता है ना आपकी आंखों के ऊपर, और फिर आपके ऊपर लेंस लगाता जाता है कि अच्छा अब आपको ठीक दिख रहा है क्या, अब आपको ठीक दिख रहा है क्या, फिर आप बताते हो हाँ इस वाले लेंस में मुझे बेटर दिख रहा है, राइट. तो बेसिकली आपका वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि हाँ इससे मुझे क्लैरिटी मिल रही है. सिमिलरली हम हैप्पीनेस को भी इसी तरीके से ट्रैक किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में. तो ये पाया गया था हमारे आधे से ज्यादा टाइम जब हम जगे हुए होते हैं, so we are wandering, जैसा कि मैंने आपको बताया. So we need to be here and now, and it is the most difficult thing to stay in the present moment. न्यूरोसाइंस इसके पीछे ये है कि हम जो इवोल्यूशन जब हमारी हुई तो हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली स्कैन करता था थ्रेट को, यानी कोई डेंजर तो नहीं आ जाएगा, तो हम हमेशा ही विजिलेंट मोड में रहते हैं इस तरह का. और नेगेटिविटी जो भी अगर हमारे को पेनफुल एक्सपीरियंसेस कभी पास में हुए, आवर माइंड ट्राइज टू, not even tries, it actually imprints that negative memory very very quickly, and that's why we tend to take the negatives very very intensely. तो negative emotions जल्दी याद रहते हैं और माइंड की वैंडरिंग की आदत हो जाती है. जैसे इसका एक एग्जांपल है कि लेट्स से कि हम मंदिर में गए और हमारा ध्यान भगवान की पूजा में नहीं है, हमारा ध्यान पूरा बाहर है कि मेरे जूते कोई ना चोर ले, तो हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है यूजुअली. सो माइंड इज ऑलवेज वैंडरिंग, राइट. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हैप्पीनेस को हम एक चीज की तरह मानते हैं रादर देन साइकोलॉजिकल स्टेट है. हैप्पीनेस इज नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, राइट. सो कैन यू बाय हैप्पीनेस? व्हाट डू यू से? कैन हैप्पीनेस बी बॉट? We can never buy happiness. There are things हम सोचते हैं कि चीजों से हैप्पीनेस मिलती है, पर चीजों से हैप्पीनेस कभी भी नहीं मिलती है. जैसे एक फेमस डायलॉग भी है ना दीवार फिल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है. तो जो चीजें हैं हम जिनको एक्चुअली में सोचते हैं कि वैल्यू ही नहीं करते हैं शायद, और हम सोचते हैं ये चीजें, क्योंकि सोसाइटी ने हमें यही बताया है कि गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छी जॉब, ये सब चीजें खुशी देती है, बल्कि ये चीजें खुशी नहीं देती है. और जो चीजें खुशी देती हैं उनको तो हम खरीद ही नहीं सकते हैं, राइट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है हमारे जमाने में सिर्फ एक डीडी आया करता था, दूरदर्शन हुआ करता था. आज के जमाने में आप लोगों के पास वेब सीरीज और नाना प्रकार के सो मेनी थिंग्स, सो मेनी चैनल्स. फिर भी मैं आए दिन देखती हूँ कि बच्चे कहते हैं हम तो बोर हो गए, है ना. सो दिस थिंग हैपेंस. सो वी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, वी हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस. नाउ आप समझते हैं कि हैप्पीनेस डिफ्यूज किन किन चीजों से होती है. हैप्पीनेस का जो बलून है वो किस किस चीज से जल्दी से पंक्चर हो जाता है, जल्दी से समझते हैं इस चीज को, राइट. सो 3 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर कोई चीज की कमी है तो हमारी हैप्पीनेस खत्म होगी. अगर हमें आइसोलेशन मिलता है तो हैप्पीनेस खत्म होती है. अगर हमें कंपेयर किया जाता है तो हैप्पीनेस खत्म होती है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये ज़ीब्रा है और इनकी एक बिहेवियर होता है कि जब अगर पानी के आसपास ये रहते हैं तो ये लोग अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं. यदि पानी स्कैर्स होता है तो ये अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ाते और टेम्पररी मेटिंग बिहेवियर रखते हैं. इंसानों में भी एक अच्छे से एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ. बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, बॉम्बे दिखाते हैं जब, तो जैसे इंग्लिश मीडियम मूवी में भी दिखाया था कि जहाँ पे पानी को लेकर कितनी लड़ाई चिल्पों होती है. या जब भी कभी कोई नेचुरल डिजास्टर, व्हेनेवर देयर इज एनी नेचुरल डिजास्टर,
तो when there is a distribution, food packets distribute करते हैं, कोई भी चीज distribute कर रहे होते हैं तो stampede सा हो जाता है. So whenever there is anything which is scarce, so वहाँ पे anonymity होती है and happiness भी उसका level down होता है. Then going further, to understand this, what is our second need? Our need is to be loved. If we feel unloved, then also we get unhappy. So एक यूएस के अंदर ऐसा एक वाकया हुआ कि दो प्री टर्म बेबीज थे जो कि इनमें से एक जो ट्विंस थे, ये बच्चे जो पैदा हुए, पर उनमें से एक बच्चा जो था वो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में था और मरने वाला था. Then what the nurse did was she kept the second twin in her ICU unit of her sister, and this girl just put a hand around this other girl, and this the vital signs got revived. तो इस बच्ची के vital signs revive हुए and फिर वो she could stay alive. So this is the magic of hug. तो basically हम लोगों को as a human being we do not want to be isolated. किसी को यदि पनिश करना हो, सबसे बड़ा पनिशमेंट किसी के लिए भी होता है आइसोलेशन. अगर हम किसी को कोई वेल कनेक्टेड फील नहीं करता है, कोई अकेला महसूस करता है, तो उसकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती है. सेम होता है हमारे पास. कनेक्शंस तो बहुत सारे हैं. इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव सो मेनी कनेक्शंस, वी आर ऑल वेल कनेक्टेड, बट हाउ मेनी आर रियल फ्रेंड्स? मैं अक्सर कर देखती हूँ मेरी थेरेपी सेशंस में कि पीपल फील वेरी लोनली बिकॉज we have everybody around us but we are so lonely in this world. So connections doesn't equal to real friends. We cannot share with them. So social media में भी यूज करने से there are ये happiness के लेवल को ही डाउन कर देता है. So we need to use it moderately. Now सोशल कन्फाइनमेंट, अगर सोशल कन्फॉर्मिटी एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. हम सोशल कंपैरिजंस जब करते हैं वो किस तरीके से हमारी हैप्पीनेस को डाउन कर देता है. आई जस्ट लाइक टू शो यू दिस स्मॉल वीडियो. So you walk into an elevator and naturally turn and face the door, right? It's just what we do without even thinking. All right, in the blue t-shirt, that is Nadia. She is an innocent passerby. Has nothing to do with this. Everybody else in that elevator, they all work for, would you fall for that? They're all in on the experiment. They're all purposefully facing the wrong way. Nadia is facing the front. You can just see the back of her head. Wearing the blue t-shirt, that's Nadia. She is facing the front of the elevator like a normal human being. Everybody else is facing the back. We're playing this to you in real time, no editing, as in action. So basically, मैं इसको दोबारा प्ले करूंगी, पर पहले इसका प्रीएम्बल बता देती हूँ. What exactly I want to show in this video. Basically, मैं ये बताना चाहती हूँ सोशल कन्फॉर्मिटी की बात करें. How we imitate the behavior of other people. So this is to हम सोचते हैं यदि हम दूसरे को मिमिक करेंगे या जैसा दूसरा है उस तरीके से अगर हम भी उसकी जैसी हेयर स्टाइल बनाएंगे या उसकी जैसी क्लोथ्स पहनेंगे, इवन उसकी जैसा करियर चूज करेंगे जैसा कि स्टूडेंट्स में होता है, देन वी विल बी एक्सेप्टेड. दे विल मेक फ्रेंड्स विद अस और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे. इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा किस तरह से सारे लोग उल्टे खड़े हुए हैं एक लिफ्ट में, और जो नया बंदा, क्योंकि ये सब लोग सेट हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, एलिवेटर एक्सपेरिमेंट. जो लड़की अभी अंदर एंटर होती है वो धीरे 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 कैसे अपने आप को टर्न करती है इस सोशल प्रेशर में टू सीम वेरी नॉर्मल एंड कंफर्म टू दिस प्रेशर. दिस इज द वीडियो. सो आई विल जस्ट प्ले बैक द वीडियो. Okay, floor 2. Rebecca gets off, Emily gets on, she also works for us. We're swapping people in and out to reinforce the behavior. Emily's acting like it's the most normal. Oh, Nadia's turned. Nadia, okay, her bag is slipping off her shoulder. She's nervously playing with it. Nadia's now halfway round. Would she go any further? Emily gets off, Mike gets on. Again, Mike works for the show. Presses his button, faces the back like it's the most normal thing in the world, like he does it every day. Nadia is really feeling the pressure right now. I'm not going to see anyone else. Got to make some small talk. He was in celebrity rehab. She's looking towards the back of the elevator because everybody else is. Floor 4.
Fourth floor, Mike gets off. Lauren gets on. Lauren also works for us. She's in. Oh, and Nadia has gone. The fourth floor, Nadia has turned all the way around. She's looking at the back of the elevator. That is not normal human behavior. Nadia is looking at the back of the elevator purely because everybody else is. Okay, you've seen it in real time. Let's play that for you again in fast forward. Nadia, turning. So in this video, you could see how funny it is now. We mimic others and we actually just want to conform so that we conform to the pressure of the social norms so that we are included in the same group. So just going a little bit further, now we will be talking about, just give me a moment. Yes. Confinement. So this is the third diffuser. अगर happiness को diffuse करने के लिए कोई चीज हो सकती है, जैसे मैंने कहा isolation, लोगों को जब prison में बंद करा गया, जिन लोगों को भी किया गया है, ये worst एक punishment हो सकता है किसी भी human being के लिए, यदि उसको सारा socially से isolate कर दिया जाए, जैसे कि हमारे साथ हो रहा है COVID में, we are all isolated, we are missing our friends. So this also leads to depression and anxiety, right? And aggression also. So you will see the crime rate rising like anything because of the confinement. So this is again one. Now, this is very, very important comparison. आप एक picture देख रहे हैं अपनी screen पे. अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें क्या observe करें. ये Olympics की picture है. तो ये medal winners हैं. So as you all know, gold, silver and bronze. तो please मुझे बताएं कि इसमें क्या दिख रहा है. What do you observe? You will be telling me कि इसमें क्या दिख रहा है. There is something in their face. Just observe and let me know what it is. What is the difference between three of them? Who is the most happy? Facial expression, yes, very true. Somesh says happiness, yes, very true. They all are happy. But can you see that there is a difference in the first is the most happy? Perfect. The middle one is, so Somesh says middle person, but middle person is what? Happy, unhappy, what? What do you say? What do you observe? इसमें क्या एक बंदे की gold वाला is more happy, middle person okay Shrestha says happy okay. ये एक इसको कहते हैं silver face. आप देखिए extreme आपके left में जो बंदा है जिसके पास silver medal है ना, इसका चेहरा देखिए, आप देख पा रहे हैं उसकी face क्या दूसरों के जैसा ही खुश है क्या? Is he that happy as others are? No. You can really see the difference. तो क्या हुआ, ये baseline comparison की जो मैंने बात की थी ना, gold वाले को तो पता है I have won the tournament. जो middle वाला है उसको लग रहा है अरे मुझे तो first rank मिल सकता था ना, and the bronze one is at least I am better than those who didn't even get the rank. So this is how we compare ourselves. So comparisons are always painful for us. जैसे Serena Williams sisters जो हैं, अगर आपके घर में कोई बड़ा है और वो ज्यादा सक्सेसफुल है, you will still be okay with it. पर यदि घर में आप इतने सक्सेसफुल नहीं है और कोई छोटा मेंबर या आपसे छोटा कोई है who is not that successful, then you will feel the pinch or the pain of that comparison. And अक्सर कर क्या होता है in our families we are compared. You remember Three Idiots में भी जो फादर है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है, उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा. दिस हैपेंस इन आवर सोसाइटी. कंपैरिजंस आर द डिफ्यूजर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस, राइट? सो नाउ गोइंग लिटिल बिट फर्दर. ओके, नाउ टाइम फॉर अ स्टोरी. एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ. तो एक बंदा था, काफी उदास सा रहता था और उसको एक दिन है ना एक जिन मिला. उसको एक दीपक मिला, दीपक को उसने घिसा, उसके अंदर से निकला जिन. अब नाउ द जिनी सेज, बोलो मेरे आका क्या चाहिए आपको? तो वो बोलता है कि मेरे को बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए. तो बोलता है ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग यू आर आस्किंग फॉर, बट आई हैव अ कंडीशन. मेरी एक कंडीशन है. माई कंडीशन इज दैट वॉट एवर यू विल गेट, योर नेबर्स विल गेट डबल ऑफ इट. तो आपके जितने भी नेबर्स हैं, आपके जो भी पड़ोसी हैं, उनको डबल मिलेगा. He said okay, no problem. So next day he जब वो उठता है, वो फिर से उसको दीपक को घिसता है, तो जिन निकलता है. He says कि give me a house, a big nice bungalow.
खिड़की से बाहर देखता है तो नेबर के 2 बंगलो हैं। अब वो गाड़ी अगले दिन गाड़ी मांगता है, देखता है कि पड़ोसी के पास तो 2 गाड़ी हैं। बीवी मांगता है, पड़ोसी के पास 2 बीवी, एंड नाउ ही सेज ऐसा करो तो मेरी एक आंख फोड़ दो। लास्ट टाइम ही सेज कि ओके डू वन थिंग, यू प्लीज prick one of my eye so that at least पड़ोसी की दोनों ही आंख फूट जाए. So this is how we compare. So we are not very happy with what we have, but we are very sad if others are happy. So this is what happens with us. This is our usual psychology. So now going little bit further, let's understand अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ injustice हुआ है तो फिर क्या बिहेवियर होता है हमारा. लेट्स से कि आपको एक जॉब मिलने वाली थी बट आपके बदले किसी ऐसे को रख लिया गया जो इतना केपेबल नहीं था. सी नाउ व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू विल बी हैविंग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Okay, I think there is some dysfunction with my video. Maybe I'll show you sometime later or I'll share the link with you. I don't think this will. So basically I'll just explain what happens in this. दो बंदर हैं, अलग अलग केज में बैठे होते हैं. तो जो एक्सपेरिमेंटर है पहले वाले बंदर को एक क्यूक्यूम्बर यानी ककड़ी का टुकड़ा देता है. सो दिस द टास्क गिवन टू द मंकी इज कि जैसे ही आपको क्यूक्यूम्बर मिले आपको स्टोन बाहर फेंकना है. सो पहला क्यूक्यूम्बर का टुकड़ा दिया जाता है और स्टोन बाहर फेंकता है. दूसरे वाले बंदर को भी दिया जाता है खीरे का टुकड़ा और वो स्टोन बाहर फेंकता है. अब दोबारा जो है पहले वाले को तो खीरा दिया जाता है और दूसरे वाले बंदर को ग्रेप्स का टुकड़ा दिया जाता है. तो अब की बार तीसरी बार जब इस पहले वाले बंदर को जब ग्रेप्स के बदले खीरा दिया जा रहा है, इसे सिर्फ खीरे पे खीरा दिया जा रहा है. नाउ ही स्टार्ट्स थ्रोइंग ऑल द वो जो भी ईटेबल आउटसाइड. तो उस खीरे के टुकड़े को उस एक्सपेरिमेंटर के मुंह पे फेंक देता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. इट्स अ लवली वीडियो बट आई एम सो सॉरी, आई थिंक द लिंक इज नॉट वर्किंग. आई विल मूव अहेड विद दिस. So this is how if we are unfairly compared, even monkeys feel like this. So we are human beings. So how we will be feeling and how our happiness level will be, you all can very well understand by this, right? So going little bit further, actually क्या होता है हमारे ब्रेन जो है ना, ब्रेन इज लाइक अ वेलक्रो. हमारा ब्रेन एक वेलक्रो यानी आई डोंट नो हिंदी में वेलक्रो को क्या कहते हैं, बट वो हर चीज उस पर चिपक जाती है. जैसे पहले के कुछ ऐसे शूज होते हैं ना जिसमें लेस नहीं होती, बट वो एक वेलक्रो होता है जिससे कि जूता चिपक जाता है ना. सो ब्रेन इज ऑल्सो लाइक दैट. नेगेटिविटी स्टिक्स, बट अगर कोई पॉजिटिव चीज हमारे साथ होती है तो टेफ्लॉन की शीट की तरह अगर उसमें पानी डालो तो सर से सरक जाता है ना. So positive things do not stay in our mind. They don't stay longer, but negativity sticks in our mind. We often pay attention and remember the negative things more. And positivity को हमें inculcate करना पड़ता है, हमें weave करना पड़ता है. It is good for our survival. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे को threat रहती थी, हमारे ancestors जो थे वो threat mode में रहते थे. But हमारी quality of life कैसी हो जाएगी अगर हम constantly negative ही चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे. यदि आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था, यू माइट बी नोइंग हाउ स्ट्रेस डैम्पन्स आवर डे टू डे फंक्शनिंग, राइट? सो नाउ गोइंग लिटिल बिट फर्दर, now we come to a very important slide, which is how to enhance happiness. So basically हमने पूरी बातें समझ ली. We have understood everything. We have understood what are the diffuser. Now we are talking about what are the enhancers of happiness. तो हमारा वो जो बलून है वो किन चीजों से भरेगा, कैसे we will be more happier. So if we express, मैं एक स्लाइड को I have kept little bit more slides so that you understand how to do all this. So savoring is a behavior जहाँ पे हम happiness को enhance करते हैं, हमारे positive experiences को किस तरह से हम relive कर सकते हैं, replay कर सकते हैं, that is savoring. तो उसी moment को और बढ़ा देना, living in present is savoring. Then nurturing good relationships, gratitude. So cultivating 3 good things in our life, keeping some short-term and long-term goals, coping in the right thinking pattern, having positive thoughts, being kind to others, being kind to ourselves, learning to forgive. Then flow is something in the moment. Flow is something when you lose yourself, you lose the consciousness of time. जैसे जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, या कई लोग जब बुक रीड कर रहे हो तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे निकल जाते हैं. इवन स्पोर्ट्स प्ले करते करते, इफ यू आर प्लेइंग रियली वेल, यू जस्ट डोंट नो हाउ
time just went away. At times, some subjects which you really like, even in that it happens, you are able to do a lot of work in very small amount of time. That is the flow state. So, and committing to your goals, these are the things, and one by one I'll be explaining them. So, ग्रैटिट्यूड. सो आप कैसे ग्रैटिट्यूड को ये एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं, रिसर्चर्स भी कहती हैं, इफ यू इनकलकेट ग्रैटिट्यूड देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सो आप एक छोटी सी चीज कर सकते हैं. जस्ट टेल योरसेल्फ बिफोर स्लीपिंग 3 गुड थिंग्स व्हिच हैपेंड टू मी टुडे, and just what you can, there are so many things you can do. आप मैसेज लिख सकते हैं, you can write messages to your loved ones. You This is COVID time. You can also help those people who are confined at their homes. You can help them with medicines, groceries, or in other times you can simply help people with whatever they want and what you can afford. Then you can focus on what you still have. So many people have lost their jobs. So many people have lost their increments and so many other stuff. You still have a job. You still have a home. Just focus on what you have. So inculcating gratitude would really, really help you stay happy. Then, so this is a very beautiful thing. If you look here, एक teacher थी, उन्होंने what she did was, उन्होंने वो classroom में गई. She went to the classroom and she gave the balloons to the children. उन्होंने ये balloons जो थे बच्चों को दिए और उन्होंने कहा अपना अपना नाम लिखो and इसको blow करो और ऊपर छोड़ दो आसमान में, इसको धागा बांध के, ठीक है, मतलब classroom में छोड़ दो. तो सब बच्चों ने वो किया. Then the teacher said, टीचर ने टॉस कर दिए सारे बलून्स, जैसे जैसे बच्चे छोड़ते गए बलून्स को हवा में. Then the teacher said, now find out your balloon. Now it took lot of time. After 3 minutes, teacher said, okay, अभी जो बलून आपको दिखता है ना उसको पहले पकड़ो आप, ठीक है, और जिसका है, जिसका भी नाम है उसको दे दो. So what they found was that the children discovered कि ये activity बहुत जल्दी हो गई. So when you really help others, you also tend to help yourself. So this was a beautiful way of insisting if we care about each other, we'll also find our own happiness. So now going little bit further, this is a paying kindness forward. इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो भी kind acts आप करते हो एक वीक के लिए या 21 दिन के लिए, every day, just count how many times in a day you have been kind to others. And please notice when others have been kind to you and just make a note of it. At the end of the day, pay the kindness back. At least 3 ऐसे acts किसी 3 दूसरे लोगों के लिए कीजिए. Be kind to 3 other people. Spread that kindness. When you are giving to others, you also receive. ऐसा हमारी हिंदू फिलोसफी में कहते भी हैं, जो जितना उदार दिल का होता है, जितना देता है उसे ऊपर वाला उतना ही और देता है, उसके ऊपर आशीर्वाद रखता है. So more you give, more you get. So this was paying kindness forward. So this is a beautiful video. I would like you to just watch this. This is on kindness only.
this was a very beautiful video. So spreading kindness, spreading love. So this is how you enhance your own happiness also in return. So now अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट बहुत अच्छी है. So basically, thank you. So people actually like the video. Thank you so much. So coming to forgiveness. So ये ऐसी मैं कहूँगी कि बहुत डिफिकल्ट है. This is an I would like all of you to do this. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट जरूर रहेगा बट ये इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज इट इज सेड दैट टू err is human but to forgive is divine, right? So बेसिकली जो कन्फ्यूशियस थे, जो फिलोसोफर थे, उन्होंने भी कहा था रिवेंज के ऊपर कि बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ रिवेंज डिग 2 graves. यानी यदि आपको किसी से खानदानी रंजिश निकालनी है या किसी से आपको रिवेंज लेना है तो आपको 2 ग्रेव्स खोदनी पड़ेंगी. ऑब्वियसली दूसरी आपकी होगी बिकॉज जिस तरह से जो गुस्सा होता है पहले अंतर्मन को आपके खुद को अंदर से खोखला कर देता है. तो जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, टिल यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव द अदर पर्सन, दैट एंगर कीप्स ऑन बर्निंग यू फ्रॉम इनसाइड. जैसे कि हम किसी बॉटल में टिन के बॉटल में अगर एसिड रख देंगे, दैट बॉटल इज गोइंग टू डिसॉल्व. तो हमारा बॉडी भी उस एंगर से अंदर से उसी तरह से जल जाता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट अ लेटर ऑफ फॉरगिवनेस. पर आपको ये पोस्ट नहीं करना है. यू आर नॉट गोइंग टू सेंड इट टू एनीबडी, राइट? So just write this and then recall whole of the incident. Basically हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एक लेटर राइटिंग करनी चाहिए आपको, बिकॉज एक क्लोजर, साइकोलॉजिकल क्लोजर हो जाता है. आप कभी भी भूल तो नहीं सकते अगर किसी ने आपको कुछ इस तरह का पेनफुल एक्सपीरियंस आपका हुआ है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू फॉरगेट, I'm not saying to forget, but I'm just saying to forgive, because forgiving others first give you a relaxation in your own mind and gives you a psychological closure on the same thing, right? So now let us understand the second thing, which is savoring. ये जो मैंने शुरुआत में कहा था ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है. हम क्या करते हैं सेवरिंग में? जस्ट पिक एनी वन एक्सपीरियंस टू ट्रूली सेवर ईच डे. सेवर करने का मतलब रेलिश करना बेसिकली. जैसे होता है ना, हम चॉकलेट मुंह में रख के कई टाइम तक उसको उस एक्सपीरियंस को रेलिश करते हैं, यानी हमें अच्छा लगता है. सेम वे anything which happened, take any activity for at least 7 days and just make a note. एक डायरी राइटिंग कीजिए. वो कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सपीरियंस which you have really enjoyed or which you really liked in the whole week, just write about it. It can be a nice bubbly shower with your favorite soap. It can be a delicious meal which you cook for yourself or your mother cooked for you. It can be a great walk with your partner, or it can be any other experience. आप एक सेल्फी भी ले सकते हैं. आजकल तो सेल्फी का जमाना है. मे बी यू वुड लव टू टेक a picture of it. Then think about how lucky you have been to relish that particular experience. Share that with your partner or any friend of yours, and every night please write about it. So this is about savoring, right? So basically जब हम बेसिक जैसे हमने एक बात भी करी थी कि हम कभी भी जब नाखुश होते हैं, वी ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग द आई मीन कंपेयरिंग द पीपल, है ना? जैसे अगर मैं प्रेजेंट में मुझे 1 लाख मिल रहा है तो मुझे लगता है 2.5 मिलना चाहिए. पर लेट्स से आपको गूगल में जॉब लग जाती है, तो आपको ये नहीं देखना कि आप नेक्स्ट क्या, रादर अगर आप इसको रिप्ले करो, पीछे रिवाइंड में जाओ, एंड इफ यू थिंक कि ओके अर्लियर आई वाज नॉट इवन हैविंग अ जॉब, so then you would be able to understand and you will be able to set your right perspective rather than thinking only ahead. So you can also create your own happiness by reliving पहले क्या चीज नहीं थी उससे यदि आप कंपेयर करेंगे कि अभी आपके पास क्या है, and you relive those moments of the present moment, be in here and now, then you will really relish whatever you have. So this is a reverse psychology which you can do for yourself to create your own happiness. Happiness is within. Happiness is nowhere. We need to create happiness. That is the truth. Now, we are coming towards the end of our presentation. So let us talk about ikigai. Let us talk about the purpose. ये एक बहुत ही अच्छा quote है. He who has a why to live can bear anyhow. तो ये निश्चय जो एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, उनका ये क्योट है और ये बहुत ही रेलेवेंट है. इवन विक्टर फ्रैंकल की एक बुक है
A Man in the Search of Meaning. बहुत ही beautiful book है. I think everybody should read it. It is on purpose only. And basically what he said, you must be knowing कि जो Germans थे जब ये हिटलर थे, इन्होंने नाजी concentration camp gas chamber create किया था to kill the Jews, right? So there was a psychiatrist who was taking care of all the other Jews in that camp. उन्होंने अपने उस कंसंट्रेशन कैंप में बैठ के उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस, द नेम ऑफ द बुक आई विल बी राइटिंग इन द चैट बॉक्स आफ्टर द सेशन इज ओवर, डोंट वरी अबाउट दैट. विक्टर फ्रैंकल, द मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग. So basically he was a psychiatrist and his purpose he made was to just live every day, and he started writing this book in the concentration camp and he could survive. So it is a very very beautiful book. After that logotherapy was born. So एक therapy उन्होंने उसके बेस पे existential therapy. आज के डेट में जब कोविड है, existential crisis है, why are we here, why were we even born and why we are having suffering. So all these answers are there. So we actually want, we should have a purpose in our life. He who has a purpose will definitely find out how to go for it, right? So basically, going little bit further, so everybody should have a purpose. Now, if you have a strong purpose, you will be also resilient. You will live longer. हमारे genes भी automatically अपने आप को repair कर देते हैं. Our DNA gets repaired if we have a purpose in our life. We can fight diabetes. We can fight so many other things. And we can even improvise our diet, right? Physiologically भी sleep disturbance, ये सारी चीजें we can improvise if we have a purpose. So first we should know a why of our life. So निश्चय कहते हैं, a person with nothing to live for prefers death. यानी unconsciously he thinks it is better to die. But someone who has something to live for, the reason why he continues to live, can endure anything, almost anything, because he has a how to survive. So now, do you remember Elon Musk? So he has a unique purpose in his life. A lot of people admire him. So do I. And that's great. But don't get intimidated. It's not necessary कि आप दूसरे के purpose को intimidate हो जाएं और उसको आप imitate करें. No. Start with a why in your mind. Take a classic. I'm giving you a very small classic example of American car manufacturers वर्सेस जापानीज, है ना. तो अमेरिकन कार्स जो होती हैं उन फैक्ट्रीज में क्या होता है, द वर्कर्स असेंबल दीज कार्स इन द फैक्ट्री, है ना, असेंबली लाइन. दे अप्लाई द रिबिट, द फाइनल फिक्सचर्स ऑन द डोर्स यूजिंग अ रबर मैलेट. हमारी कार्स में भी यूजुअली आपने देखा होगा जब हम डोर बंद करते हैं तो एक और फ्रिज वगैरह में भी एक रबर की रिबिट होती है. whereas the Japanese cars, their doors are engineered to fit perfectly from the start onwards. So उनकी कार ही ऐसे designed है कि they don't need any rivets, right? So they have a purpose in the beginning. They start with a purpose in the beginning itself rather than the other way around. Some people only manipulate to get the end result. They are the other way around. So they have a purpose. Purpose is very, very important. And if you know the purpose in your life, please understand, purpose job में और purpose life में दो अलग अलग चीजें हैं, right? Too many people look for a job that pays the bill. कई बार ऐसा होता है, you end up in a course, you end up in a college which was not your real branch you wanted or a real job you wanted, right? But they simultaneously can do something else which can fill the purpose of their life. A very small percentage of people actually find purpose in the work they do. एक गैलप की स्टडी हुई थी 2013 में. Only 30% of people, American employees पे हुई थी, feel engaged at work. And मैं तो जब भी थेरेपीज लेती हूँ, काउंसलिंग लेती हूँ, करियर काउंसलिंग करती हूँ, I have seen that bright students, IIT Delhi students, they end up taking some brand just because of the brand value. Please find out the why in your life. What are you doing? Why you are doing? You will figure out how of your life. That would be your ikigai. Please understand this. Okay. The point is that your career doesn't necessarily have to be your purpose as well. You can do something simultaneously. Find your purpose. Your young people, please find out what do you value? Who are you? So let us do a small, very quick activity. So just figure it out. How do you describe yourself when you are at your best? And just write in the chat box. मैं आपको एक कोलाज दिखा रही हूँ, उसमें आपके कुछ adjectives हैं. आपको जब लगता है when you are at your best self, what do you value in yourself? How others describe you? So ये मैं आपको ये adjectives show कर रही हूँ. Please write in the chat box. What are the two things which you can
relate to yourself when you are at your best self. Just find out any two. Let us very quickly do that before we go further. May I have a quick chat box reply? I'll request for the same. If you can just quickly take anything you're best at. Shrestha says calm and hardworking. Very nice. Yogesh says energized. Beautiful. Caring and energized. Priyanka says very nice. Great. All right. Perfect. So keep on writing. Then Somesh says hard work I have done and motivation for my achievement. Perfect. Now going little bit further, you can have this collage later on. I'll just quote it for you. Miss Singh says caring, courageous and hard worker. Okay. So now what do I value? So क्या होता है? What are the directions in my life? What are the goals of my life? And importantly, what do I value? मेरी bucket list क्या है? जैसे मैं अपना time, resource, money, where do I put my time, resource and money? So that I set goals of life according to the purpose and whatever I value in my life. एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके फोन में आपका जो वॉलपेपर है दैट आल्सो डिफाइंस व्हाटएवर यू वैल्यू सम पीपल पुट द पिक ऑफ देयर गर्लफ्रेंड और मे बी देयर वाइफ सम पीपल वुड पुट सम फेवरेट म्यूजिशियन ऑफ देयर्स लाइक दैट सो जस्ट फाइंड आउट whatever you value and put it over there. So different people find value in different things. It can be entertainment, it can be joy, beauty, dance, sports, maybe travel somewhere you wanted to. So it's just a reminder of the direction you want to go for. No? So value is very important. Now, how would you like to be remembered in your life? So this is very important. So आप सोचिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं आपकी जेब में. एक पैसा आपके लिए important रहेगा. Versus if you have 1 lakh rupees, so you do not value that much money, right? Every rupee will count. Similarly, Steve Jobs ने एक बहुत beautiful स्टेटमेंट दिया था अपने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को. दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स. आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू. He was dying of pancreatic cancer when he gave the commencement address in 2005 to the Stanford students, not Harvard, but Stanford, sorry. So he says, when I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as it was your last, someday you will most certainly be right. It made an impression on me. Since then, for the last 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today was my last day of life, would I want to do what I am doing today? And whenever the answer is no, for too many days in a row, I need to know I need to change something in my life. Your time is limited, so don't waste it on somebody else's values. Don't live by what people think, what your parents think, what your other students are doing, or what your colleagues are doing. Don't let the noise of others' opinion drown your own inner voice. And most important, have courage to follow your heart and intuition. With that, I come to the last slide of mine, which is Ikigai. So basically, Ikigai is nothing but a Japanese term which says a reason to being or reason to live. It is a beautiful book also. You can find that Ikigai is a very beautiful book which says that it is a reason because of which we just jump out of the day of the bed every Monday morning, है ना? जब Monday होता है तो अरे यार फिर से वही जॉब, फिर से वही कॉलेज, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको? So this word refers to a direction or purpose in your life that which makes one's life worthwhile, and towards which an individual takes spontaneous and willing actions, right, to make it more meaningful. So basically, it's something you love, something you're good at, something you are world is ready to pay for, and world is waiting for you. So it is where the need of world is and your talents cross. There lies your vocation, right? And Simon Sinek also says in his epic book, Start with the Why. If you know why of your life, you will do it anyhow. So what is your Ikigai? Just you can, if you want, you can write in the chat box. What is your Ikigai? So are you a camel or are you a lion? I'll just like to ask you. तो जो camel होता है ना, वो दूसरों का बोझ ढोता है, दूसरों के ओपिनियंस ढोता है, दूसरों की थिंकिंग से चलता है. मैं देखती हूँ अक्सर कर कॉलेज स्टूडेंट्स और लोग बाग, all the people, most of the people, they follow the opinion of others. Are you a lion or you are a camel? You need to ask yourself. So with that, please maximize your strengths, है ना?
Do not just focus on what other people are thinking. Find your purpose of life, find your why, find what your best self is. And last thing is Ubuntu, yani humanity. So think of something. Maybe if you had some pain in your life, your purpose can be giving pleasure to others. So that can be your Ubuntu, or the for the humanity, that can be your purpose. With that, I thank you all for careful and patient listening. I would love to answer your all questions. Please go ahead with all the queries you have for today's session and the previous session I had. So I'm opening the session for addressing all the questions, if any. May I have the question? Good evening. Yeah, as I have wrote that my adjectives for personality is energized and caring. Yeah. Yeah, so my question goes towards that side that because I'm caring and I do care and then I feel energized that I have taken care of everybody, especially my family and the relatives. But then I do not get the response. I mean, I do not get what I expect. That I have done so much for them, but I do not get that praise. So in that case, what type of the things come in a person's mind, and what happens to that person's nature? Right. So basically, the thing is, let's say that you are a person who loves to care for others, and you love to get energized by being with others, right? Now you do not get love in reciprocation, or that care in reciprocation, right? So first thing is, आपकी जो we say expectations are the root cause of any misery. So first of all, it may be your nature, you love doing that, but then if in return, because I did that, and other person should also reciprocate my whatever I have done for them, it is definitely going to cause a lot of pain to you. So first thing is, stop expecting from others, though it is very easy to say and very difficult to practice. But this is how, because see, you have I would rather I'll go a little bit in psychology for this, because your question is little bit personal. So it is like, maybe you're doing a lot because you have not felt loved. Maybe we can personally chat sometime later. Probably this would not be a very good platform to answer you right now. But the basic is, you need to search within yourself. Are you seeking approval of others? Are you looking for love from others? Is it what is giving you a lot of pain? What is your hurt actually? And how are you processing that information? So basically, how you're looking at the situation and feeling the pain because of what you're thinking about the situation is important here. Are you getting me? Does that answer you? Yes, ma'am. But I'm not understanding that when this is a positive sign, when somebody gives you care. Yes. So, Yes. like, what things makes the front person not think of her? What the things actually makes him blind, him or her blind? That although he or she is being saying that she is being caring, children are seeing that mother is caring, and the children do not respond. I'm talking about the latest So trend which is yes, going on. I got you. So it is not about them, it is about you. Please understand this. Your question is not about them. It is how you're perceiving the situation. Okay. So basically, it is how you're feeling about it. It is your expectation, no, that they should be reciprocating you. But uh, this is how you're processing how they are looking at you, and that is your own expectation that they should give something to you back. So ये आपकी demand है actually. If you look at it in pure psychology terms, I will say you are demanding from others that may I request you to just mute yourself for a moment so Yes, that ma'am. the voice doesn't echo. Yeah. Because this is a deep psychology thing which you are asking, maybe I'll connect with you later, but मैं आपको फिर भी I'll answer you here.
So basically, you are demanding that people should give love back to you. But people are people. You have to have a other acceptance. Other acceptance, self acceptance है कि what मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ. Other acceptance का मतलब होता है जैसे भी लोग हैं, they have a right to, they have a right to reciprocate or not to reciprocate. आप उनके सर पे बंदूक रख के नहीं कह सके, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया था तो you have to revert me back. Can you do that? You can't do that, right? So that is a demand you are making from others. So basically you need to work on that demand. डिमांड के बदले इफ यू शो अ प्रेफरेंस, हाउ, अगर आप अपने दिमाग में यही स्टेटमेंट बोलोगे, हाउ प्रेफरेबल इट वुड बी इफ दे वुड हैव रेसिप्रोकेटेड माय लव. आप देखिए कि आपका जो फीलिंग है ना उन लोगों के लिए, दैट वुड गेट बेटर, और आपको इतना हर्ट फील नहीं होगा. Actually, you are processing hurt because of the way you are looking at that situation or other people. The moment you accept other people as they are, you also reversify that hurt. Priyanka, have I answered you rightly? Please let me know. Yes, ma'am. Most of the things. Yeah, yeah, ma'am. Thanks, And ma'am. rest of all, it is very personal, so maybe Yeah, we'll yeah. have to talk later on. Definitely. Yeah, definitely. I would like to have conversation with you later on. Sure. Sure. May Thank I you, have ma'am. some other answers, questions as well? Do we have some more questions? Kindly unmute yourself if you have more questions. I think we will end here now. Sure. The session was very good, and that one video you'll be sending the link. Yeah, I'll send the link. Sure, sure. I'll send. Yes, I'll send. No problem. Saurabh? Ma'am, what was the name of that book? Which one? I mentioned 2, 3 if I'm not wrong. Which one you're talking about? Are you talking about Ikigai or the other one? No, ma'am, other one. That searching, some name was searching. Okay, Like, Man in Search of Meaning. I'll just write it for you. I'll just write in the chat box. okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. It is by Viktor Frankl, actually. I have written in the chat box for your reference. I think I have given a private message by mistake. I'll just write it for everybody. The Man in the Search of Meaning. I hope this will be of some use, these happiness tips and the Ikigai thing. Thank you so much for the patient listening. Thank you all. Thank you, ma'am. Again, all the participants, we can meet tomorrow morning, 7 a.m. with the yoga session again. Yes, sir. Thank you. Thanks.